So good morning students. So today I will start the next chapter, a new chapter, that is permutation and combination. तो चैप्टर 2 तुम लोग को वो दूसरा साल पढ़ाएगा, इसलिए हम चैप्टर 3 को पढ़ा रहे हैं. So today I will start the chapter that is called permutation and combination. Permutation and combination. So this is the chapter. We'll start. तो देखो permutation combination में mainly आता है कि what do you mean by permutation and what do you mean by combination. So in case of permutation combination, the most important thing is what? How to judge whether it is a question of permutation और combination. हम लोग कैसे जांच कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन किसका है, permutation का है या combination का है. So that is very important in permutation combination. So okay, let me go for an example. Suppose there are some items you have considered. Let's say A, B, C ना. तो हम दोनों का डिफरेंस तो दिखाएंगे A, B, C. तो if you arrange them, how many arrangements you will get there? So if you arrange them, you will get an arrangement like A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B and C, B, A. So देखो using them you have got how many arrangements? You have got 6 arrangements there. That means by using ABC you will have 6 permutations there. So every arrangement is called a permutation. But the same thing if you go for combination. Combination का मतलब है कि making selections or forming groups. Simply मान लो groups, हम groups बनाते हैं. तो ग्रुप्स बनाते हैं और इसमें हम लोग अरेंज करते हैं. तो ग्रुप जब बनाएंगे तो इफ़ वी वांट टू गो फॉर अ ग्रुप ऑफ ए बी सी तो कितना बना सकते हैं? कैन वी गो लाइक दिस ए बी सी बी बी ए सी देन बी सी ए देन सी ए बी देन सी बी ए. तो इफ़ यू गो फॉर द ग्रुप्स, so will there be 6 different groups in this case? ऐसा हो सकता है क्या कि इसमें हम ABC एक ग्रुप हो गया, ACB एक दूसरा ग्रुप हो गया, BSC is another group, BCA is another group, CAB is another group, CBA is another group. So that's not possible, है कि नहीं? So all these things goes to a single group only. If you go for group, just a one group you have got. It doesn't depends on the order that you have arranged. Whether you write A at first or B at second or first, it doesn't matter. Wherever you write, this is a group of ABC, this is also a group of ABC, this is also a group of ABC. So everyone is a group of ABC. इसका मतलब देखो same question में when you go for combination you have got just one only. If you go for permutation you have got 6. मतलब ये होता है कि मेन डिफरेंस ये है कोई भी चीज़ जो अरेंजमेंट से बनता है, if it made by the arrangements, मतलब if you change the order of arrangements, if you have got a different things you need, that must be the question of permutation. And if the question, if you change the order, if there will be no difference, whatever you need, if there will be no difference, then that must be the question of combination. मतलब सिंपली देखा जाए तो अरेंज कर रहे तो permutation और ग्रुप बना रहे तो कॉम्बिनेशन. लेकिन ये अभी बहुत सिंपल लगता होगा कि हाँ अरेंज करने से परमुटेशन है और ग्रुप बनाने से कॉम्बिनेशन है. लेकिन जब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा कि दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन और परमुटेशन. तो हमको खुद जज करना होगा कि हाँ इसमें क्वेश्चन परमुटेशन का है और ये कॉम्बिनेशन का है. दैट वे यू हैव टू जज इट एंड यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूलाज. ओके, इसका डिस्कशन हम और भी आगे जाएंगे, लेकिन पहले हम लोग का इसको कुछ परमुटेशन का कुछ फार्मूलाज को जान लेता है कि परमुटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, व्हिच इज कॉल्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड
multiplication principle. Also called multiplication principle. तो what is multiplication principle? देखो, तो इसमें ऐसा होगा, if an operation can be performed in, if an operation can be performed in m different ways, following which another operation another operation can be performed in n different ways. हम डिफरेंट को शॉर्ट में लिख रहे हैं, n different ways, and a third operation can be performed in p different ways, and so on. P different ways and so on. तो फिर ये on to ये लाइन में go to the next page. So on and so on. Then all these operations can be performed together in m into n into ... ways. मतलब जितना ऑपरेशन परफॉर्म करे सबको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ वेज दैट कैन बी परफॉर्म टुगेदर. तो दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. अभी देखो हम इसको सिंपल एग्जांपल इसका एक दिखाते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो यू आर अरेंजिंग, सपोज देयर आर 4 letters given. Now question is what? How many 3-letter word can be formed? लेकिन इसमें एक बात है कि इसमें 2 क्वेश्चन होगा. One is without repetition, और another होगा with repetition. क्योंकि with repetition और without repetition में एक डिफरेंस है, हम बताएगा क्या डिफरेंस है. तो अभी ऐसा है कि हमको 3 लेटर वर्ड्स बनाना है. तो इफ़ यू गो सिंपली इन द फर्स्ट केस, इसमें रिपीटेशन नहीं होगा, मतलब सेम लेटर्स 2 प्लेस में नहीं आएगा. इफ़ यू गो फॉर द फर्स्ट केस, देखो अभी हम ये क्वेश्चन को, ये प्रिंसिपल कैसे यूज़ करेंगे. देखो, तो एक वर्ड के लिए हमको 3 लेटर वर्ड्स है. 3 लेटर वर्ड मतलब जैसे कि लाइक ABC, ऐसा वर्ड चाहिए ना. और ऐसा वर्ड बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है कि ये 3 जो प्लेस है, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये तीनों प्लेस को फिल अप करना है.
by using 3 letters. That means if you separate them, इसका मतलब now you have 3 operations to be performed to fill up these 3 places to get that 3 letter word. Okay, मतलब हम लोग को 3 लेटर वर्ड बनाना है. मतलब हम लोग को फाइनली ऐसा है कि you have to perform 3 operations to fill up these 3 places. तो एक एक ऑपरेशन से एक एक प्लेस फिलअप होगा. जब हम सभी को अप्लाई करेंगे तो सभी प्लेस फिलअप होगा, तो यू गेट द 3 लेटर वर्ड. यही उसका प्रिंसिपल है. अभी हम लोग इफ वी स्टार्ट बाय दिस प्लेस, सपोज हम ये प्लेस को फिलअप करना है. तो नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेज यू कैन फिल अप दिस प्लेस. देखो ये प्लेस में हम लोग इसमें से कोई भी लेटर डाल सकते हैं. देयर आर 5 लेटर्स, तो यू कैन पुट एनीवन हियर. सो देयरफॉर दिस कैन बी फिल अप बाय व्हाट 5 वेज. तो उसके बाद क्या होगा, एक लेटर जो इसमें गया है वो तो नेक्स्ट में नहीं आएगा, और जब लोग नेक्स्ट में नहीं आएगा तो हम लोग के पास अभी लेटर्स कितना है 4, क्योंकि एक इसमें हम डाल दिया तो बाकी रह गए 4. तो 4 में से कोई भी एक यहाँ में आ सकता है. तो डेट मीन्स दिस कैन बी फिल अप बाय 4 वेज. देन और एक काम हो गया थोड़ा नेक्स्ट प्लेस. तो नेक्स्ट प्लेस के लिए हम लोग के पास 3 लेटर्स है, तो तीनों में से कोई भी एक डाल सकता है बाय 3 वेज. So these are the operations you can perform individually for every place. But when you fill up all of them together, तो हमको क्या करना होगा, you have to multiply them. So therefore, अभी by principle क्या होगा, total 3 letter word कितना बनेगा, provided repetition not allowed. Okay, क्योंकि repetition allowed होगा तो नहीं होगा. तो not allowed में उधर repetition दिया है. So in this case, you just multiply them 5 into 4 into 3. तो ये कितना हो गया 60. इसका मतलब 60 लेटर्स हम इसमें 60 वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं. 3 लेटर वर्ड्स 60 बना सकते हैं हम लोग. अब ये क्वेश्चन का हम लोग सेकेंड केस में जाएगा. इफ़ यू गो विथ रिपीटेशन, हम लोग रिपीटेशन मतलब यू कैन रिपीट एनी लेटर इन एनी प्लेस. मतलब एक प्लेस से ज़्यादा प्लेस में भी हम लेटर्स को पुट कर सकते हैं. जैसे कि मान लो एक को हम यहाँ में भी डाल सकते हैं, यहाँ में भी या यहाँ में भी, तीनों में कहीं में भी हम 1 2 3 जितना भी ऐसा है हम डाल सकते हैं. लाइक दैट बी ऑल्सो, लाइक दैट सी ऑल्सो, लाइक दैट डी. और तो अभी इसमें हम लोग देखो ये सेम वे से जाएगा. तो दिस अगेन यू कैन फिल अप बाई 5 वेज. क्योंकि रिपीटेशन होगा तो इसमें हम लोग जो नंबर डाला है, जो लेटर्स डाला है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. द सेम कैन बी हियर ऑल्सो. देखो अगेन यू हैव 5 ऑप्शंस लेफ्ट. So this can be filled up again 5 ways, and again you have 5 options left. So this can be filled up again 5 ways. So in this case total कितना बनेगा 5 into 5 into 5. ये जो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, दिस इज बाय दिस प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और फंडामेंटल प्रिंसिपल. तो इसमें हमको कितना मिलेगा 125. देखो रिपीट नहीं होगा तो 60 वर्ड्स बन गया, रिपीट होगा तो 125 वर्ड्स बन गया. But in both the case, you have applied the same formula that is called fundamental principle of counting. तो यही इसका फ़ायदा है कि बहुत क्वेश्चंस में जब हमको फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना मुश्किल होगा तो ये फार्मूला से जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. और दूसरा बात, इन फार्मूलाज, इफ़ यू गो इन फार्मूलाज फॉर परमुटेशंस, तो ये दोनों केस में अलग अलग फार्मूलाइज होगा. लेकिन अभी इसमें देखो हम एक ही फार्मूला से दोनों को सोल्व कर सकते हैं. यू कैन सॉल्व बोथ ऑफ देम. So that's the importance of this result, this principle. तो आफ्टर दैट हम लोग जाते हैं अभी परमुटेशन का जो बेसिक रिजल्ट है. तो बेसिक रिजल्ट क्या है, तो नाउ यू गो फॉर द बेसिक रिजल्ट्स ऑफ परमुटेशन. तो बेसिक रिजल्ट ऑफ परमुटेशन क्या होगा, नंबर 1, if तो परमुटेशन क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन. परम्यूटेशन का मतलब है कि अरेंजमेंट्स.
permutations of n different items, permutation of n different items taking r different at a time. Number of permutation of n different items taking r different at a time when repetition is not allowed is NPR. हम इसको ऐसे लिखते हैं, और it is also written as NPR, also written as PNR. So these are notations, but mainly this is the notation used here. So इसका formula है n factorial divided by n minus r factorial. So I think all of you know about this, what is n factorial and what is n minus r factorial. तो लेकिन इसको हम लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये कब अप्लाई होगा? आर डिफाइंड, मतलब जब रिपीटेशंस अलाउड नहीं होगा। तो जैसे कि अभी जो हम क्वेश्चन किया था ABCD 3 लेटर वर्ड्स बना रहे हैं जिसमें हम लोग को रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा? टोटल है n मीन्स 5, तो 5 में से हम लोग कितना को अरेंज कर रहे हैं? 3 लेटर्स के लिए हमको 3 ना, 3 लेटर वर्ड के लिए 3 अरेंज कर रहे हैं, तो r होगा 3, n होगा 5। तो इसको डायरेक्ट अप्लाई करो, कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 3, दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 120/2 एंड दैट इज कितना? 60। जो हमको पहले भी 60 मिला था, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला से हो गया। लेकिन जो रिपीटेशन अलाउड होगा तो उसके लिए फॉर्मूला नहीं होगा। रिपीटेशन जब अलाउड होगा तो उसके लिए हम लोग को दूसरा फॉर्मूला करना होगा, और दैट इज द सेकेंड रिजल्ट। तो नंबर ऑफ permutations of n different items, n different items taking r at a time when repetition is allowed. When repetition allowed is n to the power r। तो इसमें हम लोग को n to the power r ये फॉर्मूला हम लोग यूज करना होगा इन केस ऑफ व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। अब ये सेम क्वेश्चन में, इन द सेम क्वेश्चन इफ यू गो बाय दिस रिजल्ट, जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो ये फॉर्मूला होगा, तो कितना होगा? n is 5, r is 3, so 5 cube that is 125। तो 125 लेटर वर्ड्स यू कैन फॉर्म, जैसे हमको पहले भी मिला था। ये है, देखो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। दिस इज यू कैन अप्लाई ओनली व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड, एंड दिस इज यू कैन अप्लाई ओनली व्हेन अलाउड। तो इसको तुम लोग ध्यान से देख लो। तो ये हो गया, कब अप्लाई करना होगा? जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। इसमें n क्या है? द नंबर ऑफ आइटम्स गिवन होगा। r क्या है? हम कितना आइटम्स को अरेंज कर रहे हैं। तो व्हेन यू अप्लाई दिस इज द रिजल्ट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और जब रिपीटेशन होगा तो वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, देन यू हैव टू गो बाय दिस। n हो गया नंबर ऑफ आइटम्स गिवन, एंड r हो गया कितना आइटम्स को हम लोग अरेंज कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला यू कैन यूज देयर। So this was the main result of permutation. But one more thing is there, you know that when maybe that's all the items are not different, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि
हमको जो लेटर्स दिया है इट विल बी लाइक दिस ए, देयर आर 2B ना, मे बी देयर आर 3C's, ऐसा है तब मान लो। तो हम इसको जब अरेंज करेंगे तो अभी हम अरेंजमेंट्स, बिकॉज ऑल आर नॉट डिफरेंट, ये दोनों सेम है, यहाँ में 3C है, तो इसको जब अरेंज करेंगे हमको जितना वर्ड्स बनेगा इफ़ ऑल आर डिफरेंट उतना वर्ड्स अभी नहीं बनेगा। तो इसके लिए वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है। एंड इन दिस टाइप ऑफ केसेस यू हैव टू गो बाय अनदर रिजल्ट। तो अनदर रिजल्ट ये है, द थर्ड रिजल्ट, if out of n items p items are alike of one kind, q items are alike of second kind, r items are alike of third kind, and the rest are different। तो इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, देन नंबर ऑफ, हम अरेंजमेंट्स भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट एज परमुटेशन ऑल्सो, अरेंजमेंट्स ऑफ all these items be what, n factorial and whole divided by p factorial, q factorial, r factorial। मतलब ये है कि जितना भी एलाइक्स होगा वो एलाइक्स से तुमको डिवाइड करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ 3 एलाइक होने से अप्लाई होगा, इट कैन बी एनी नंबर ऑफ एलाइक आइटम्स। मतलब मान लो इसमें 4 हो गया तो और एक आ जाएगा। इसीलिए बोलता है कि दिस फॉर्मूला, दिस रिजल्ट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी नंबर ऑफ एलाइक आइटम्स। ओके, तो ये हो गया रिजल्ट 3। तो ये 3 रिजल्ट्स है जो परमुटेशन में हमको मेनली अप्लाई करना है। तो अभी इसका कुछ ये है, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स है जो that you can write, but mainly you will get the results in combinations more. So after that next you have to go for combination. After that combining results बहुत आएगा, so that also is to discuss. So but before that you have to go for combination. But I think that we can do in the next class. So let's stop today. Pages, don't go for it. Oh, you can let me complete this NC also, because just तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक ही फॉर्मूला है मेनली, नंबर ऑफ combinations or what, you can write as selections, combinations can be formed out of n different items taking
are different at a time, are different at a time, is denoted by NCR. C comes from the word combination, or you can write as NCR, or you can write as C and R. These are notations you can use, but mainly the first one mainly it is used. So equal to what? N factorial divided by R factorial into N minus R factorial. तो ये है फॉर्मूला that mainly have to use in case of combination. मतलब जब भी हमको ग्रुप बनाना है तो यही फॉर्मूला होगा. So for example, let's say suppose you have given 5 letters. तो हमको 3 लेटर्स का ग्रुप बनाना है. तो कितना ग्रुप बनेगा? 3 लेटर्स नहीं, ज़्यादा हो जाएगा. एक काम करते हैं, लेट्स गो फॉर ABCD. So in that case, how many group of 3 you can form? So group of means what? You can take ABC. This is a group of 3. You can take ABD. You can take ACD, or you can take BCD. I think no more can be done of 3. So that is total 4 groups of, but 4 combinations can be formed if you take 3 at a time. So if you go by this, by the formula, तो formula में क्या होगा? N is 4. N is 4 and R is what? How many are including in the group? Total 3. So 4C3 होगा. और 4C3 मतलब by formula क्या होगा? 4 factorial, then 3 factorial, then 4 minus 3, that is 1 factorial. So 4 factorial मतलब 24 and divide by 6, you will have 4. 24, 4 combination you have got. तो ऐसे हम लोग combination का formula को use कर सकते हैं. But some results are there. There are some results. So results तो बहुत हैं. So number 1, जैसे कि NC0, NCN दोनों का वैल्यू 1 है. मतलब if we select, if you make a group of nothing, you will get 1. If you make a group of n items, you will get 1. So that's the meaning. Then another result is, एक बहुत important result है, NCR can be written as NCN minus R. ये दोनों इक्वल है. जैसे कि मान लो 10C3 मतलब दिस इज इक्वल टू 10C, 10 minus से कितना 7. तो ये दोनों इक्वल है by this result. तो ऐसा होता है. और with the help of this result you will get one important form that can be used. Say these two combinations are equal. तो ये कब हो सकता है? This can be equal, either R and K are equal, or their sum must be equal to n. So these two are the possibilities under which these two combinations are equal. तो इसका भी बहुत यूज होता है. Then the relation between the permutation and combination. तो permutation combination relation क्या होगा? NPR is nothing but R factorial into NCR. तो ये है relation between permutation and combination. उसके बाद there is an important result. ये भी एक important result है. इसका कैलकुलेशन में बहुत यूज होगा. NCR plus NCR minus 1 equal to N plus 1 CR. After that, one more important is NC R plus 1 by NCR. So this will be what? N minus, ये रुको एक्सेस से गलती हो गई थोड़ा. NCR by NCR minus 1 is N minus R plus 1 by R. तो ये रिजल्ट बहुत केस में यूज होगा.
तो मेनली दीज आर रिजल्ट्स यू हैव टू यूज, और भी आएगा लेकिन दीज आर बेसिक रिजल्ट्स यू हैव टू यूज देयर। उसके बाद एनसीआर का वैल्यू ये एक्चुअली बाइनोमियल में हमको बाद में मिलेगा कि NC0 NC1 NC2 अप टू NCN इक्वल टू 2 to the power n। ये हम लोग को एक्चुअली बाइनोमियल में मिलेगा, बट हियर आल्सो यू कैन यूज दिस रिजल्ट। सो और भी कुछ रिजल्ट्स आएगा, सो दैट आई विल डिस्कस इन द